requests the commission to order the PIO to furnish a covering letter duly signed and sealed and certify that the copies of the information as furnished are true copies. In short, in short, the PIO is requested to put in the CTC mark and sign it on the copies of the information provided to the applicant. After hearing the applicant, the commission hereby ordered the PIO to provide on all the pages of the information copies, or else provide a single certificate as a covering letter addressed to the appellant, stating that the copies of the information provided by the PIO are certified true copies. Wisdom. Second, the commission hereby the commission on the request of the appellant dispose of this appeal as the information have been provided completely to the appellant, save SAVE, save, comma, the certification as certified true copies. Under the above circumstances and facts, the commission hereby dispose of this appeal with a clear order to the PIO to provide the appellant a certificate certifying that all the information copies are certified true copies, bracket CTC, and therefore this appeal stands disposed of. Order जाने से वो देगा होगा आपको कॉपी मिल जाएगा तो serve the copies to both the parties. ठीक. Thank you. Thank you. Tapam versus Dielareso Colorian. Dielareso Colorian and Pisatapam. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Dielareso नहीं आया. The appellant. Sir,
अच्छा ईशातपम आपको कुछ आपको इंफॉर्मेशन दिया। हाँ सर, मैं ये सर ये ए नंबर का वाला को मैं मिला हूँ सर। जी। टिल दैट इसका बात बी सी डी को सर में रिसीव नहीं है, मिला भी नहीं, वहां से फाइनेंस नहीं किया है मेरे को सर। जी। तो मैं कल वहां से बस्ती से क्रॉस करके डीएलआरसो को मैं मिला था। जी। तो उसने यही बोला था, क्योंकि आपस में 3 2 इयर्स बीच में जो ट्रांसफर का कारण से थोड़ा दिक्कत है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और हुआ है, इसलिए ये कागज को वो कैसे करेगा नहीं करेगा बोल रहा था। मैंने बोला एसआईसी से भी हियरिंग कल होगा, इसको इंटीमेशन भी दे के मैं आया हूँ। जी। तो ऐसे करके सर मेरे को 15 फर्निश द डिटेल लिस्ट ऑफ एलपीसी एसयू फेवर एप्लीकेंट सिर्फ सर ए नंबर वाला सर मिला है, जी। और बी सी डी ई ई नहीं मिला है सर, नीचे का चार जो मेरे को नहीं मिला है सर। और उसने बोला है डीलरसो का जो इंचार्ज है, उसने बोला था फाइन भी 25,000 इम्पोज किया है बोला है सर, स्टेट जी। गवर्नमेंट आपका एसआईसी को। जी। तो सर अभी मैं ये इतना साल 2 इयर्स ऑलमोस्ट स्पेंड हो गया, क्योंकि एक्चुअली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को इमीडिएटली हमको जरूर था, लेकिन नहीं मिला है। अभी साइंस बहुत लंबा भी हो गया। तो आज मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, क्या क्या ये चार को हमको इमीडिएटली विद इन द टाइम में आप हमको ये कर देने से ठीक है सर, आपका तरफ से ना। बी सी डी। बी सी डी ई सर, लास्ट फोर फोर फोर। बी सी डी। Furnished with challan of each applicant against issue of LPC. Furnished detail on the form. Furnished revenue collection data we have asked. Furnished detail. ई ई और बी बी और सर ई बी सी डी ई फोर फोर फोर। खाली डिटेल वन इज को छोड़, ए को छोड़ के सर कितना नीचे चार चार जो है मेरे को नहीं मिला है सर। जी। तो एलआरएसओ ने आपको क्या बोला कल? उसने सर वही बोला था, कल मैं इसको साथ में भी डिस्कस किया, उसने बोला है जो जो ट्रांसफर हुआ है देने में मालूम नहीं कैसे कैसे हुआ है, थोड़ा दिक्कत है बोले सर। हाँ। तो प्रॉब्लम है, वो कागज कहाँ पे हो गया वो हो गया। तो उसने बोला रेस्पॉन्स पैसा 25,000 में गवर्नमेंट को भी दे दिया। तो हाँ। मैंने बोला अगर देखा भी है तो आप हमको एक जो कागज पे आप लिखा देना चाहिए था, क्या मैं जाके भी एसआईसी को इंफॉर्मेशन कर सके, ताकि उसने सिर्फ बोला है वहां में डिपोज किया। डीएलआरएसओ का नाम क्या है? अभी डी लरसो का नाम सर बिंगिया ये है, बिंगिया ही सर वो नया वो- आया सर। 2 इयर्स में चेंज किया है सर, आप न्यूज में भी सुना होगा। हाँ। 2 इयर्स में 5 2 लरसो चेंज किए हैं सर। अभी 5 वाला बैठा हुआ है सर। तो नहीं उसका बिंगिया, ये नाम तो बिंगिया है सर अभी रिसेंटली। नहीं नाम को टिल मालूम दैट नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही चार्ज डीएलआर सो आई थिंक 6 मंथ। अभी छह नहीं महीना हो गया वो चार्ज लेके बैठा हुआ है बिंगिया। अमेना बिंगिया कुछ था सर। नहीं आप उनका नाम को मालूम होने से हम लोग यहाँ से बाई नेम भेजेगा उनको। अच्छा सर बिंगिया, बिंगिया टू कंफर्म था सर। कल मेरा वो जोन जोन सर का नंबर को मैं आपको भेज 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 दूंगा। वो आपका बाबू है वहां का सर, इसका तो नंबर मेरा पास है। सर सर बिंगिया टडप सर, सर हाँ याद आ गया, बिंगिया टडप सर। तदप TATAP। TADAP जी सर। तदप बेंगिया तदप, तदप। उसको DADAP नोट तदप। अभी सर पर्ची 6 मंथ। सो अभी डीलर सो वो टेकिंग के बैठ रहा है अभी, जो अभी स्टेशन में भी है, कल वो ऑफिस में था, लेकिन वो हम लोग को नहीं मिला है वो उसने। the appellant present, the PIO absent despite order from the court of this commission on 16th September 2025 to be
present today for the hearing without fail. Heard the appellant stated that the information is sought by him under serial number A has been furnished by the CIO, and the informations under B, C, D, and E have not been furnished to him till today, and therefore requested the Commission to issue a fresh order to the PIO to provide the information pertaining to serial number B, C, D, and E before the next date of hearing. Next. After hearing the appellant, the Commission hereby observes that the PIO that in the seventh hearing held on 16 September 2025, the PIO was ordered to pay penalty of rupees 25,000 for failing to provide the information to the appellant, comma, the order which was passed by this commission on 5th June 2025. Again, despite orders from the commission, the failure of the PIO to provide the information to the appellant is clear contempt of the orders of the code of the ethic, which is bad in law and rules. And therefore, under the above stated facts and circumstances, the Commission hereby orders 1. The PIO to be sent a warning someone to be present in the next date of hearing without fail, failing which the PIO shall be arrested and brought to the court of the commission. Second, the PIO to provide the information pertaining to
serial number BCDNE of the Form A of the appellant on or before the next date of rehearing, rehearing this appeal. Next, the appellant to be present in the next date of hearing without fail, failing which this appeal will be decided ex parte. The Commission hereby orders the next date of hearing be fixed on the date committed. April. April. 9th April. 2026. No, Thursday to morning को जाना है. Thursday 10:30 AM होगा तो 9th April तक देखते हैं if he will give you the information or no. और उसको इस बार बाय नेम से सर ऑर्डर जाएगा. जी जी सर जी 9th April 2026. सर अप्रैल ये अप्रैल तो हम 9 लोग अप्रैल 26 अप्रैल पे हाँ 9th April 10:30 AM हम लोग तो आपका ये अपील को रीहियरिंग कर दे रहा है. जी सर जी होगा 9th April को आ जाइएगा. जी जी सर ओके सर थैंक यू सर थैंक यू हाँ. 9 अप्रैल 9th 4th 2026 ओके सर थैंक यू सर Vulgar Tani Bengia Raju, Executive Engineer, PWT Sangram Division. False absence, despite being the appellants. दो है तो the PIO absent, but a letter from the PIO has been received by the Commission. The letter dated 02/12/2025, stating that he has paid penalty of rupees 25,000 as ordered by the Commission on dated 5th June 2025. In the absence of both the parties, the Commission hereby observes: number one, that this appeal was disposed of on 5/6/2025 with a clear order for furnishing the information
to the appellants within a month from date of receipt of the order. And, and the PIO was also ordered to pay penalty amount of rupees 25,000 for the violation of subsection 1 of section 7 of the RTI Act 2005, for which the PIO has deposited the penalty amount as ordered by this commission. Next, as the commission is rehearing this appeal on the request of the appellants alleging alleging the PIO that information have not been provided to them despite order from this commission. Next, now therefore, under the above stated facts and circumstances, the commission hereby order number one, the PIO to be issued a warning summons to be present in the next date of hearing without fail, failing which the PIO shall be arrested and bound to appear in the hearing. Second, the PIO to provide the complete information as sought by the appellants without fail on or before the next date of hearing. Third, the appellants to be present in the next date of hearing without fail, and failing which the this appeal will be heard and determined ex parte. Fix the next date of hearing on 9 April. 9 April है ना? 10:30 है. Bengyatani versus एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुरुंकु में ये सेम ही है क्या? अभी कभी अरे वो सेम है. सेम ऑर्डर लिखो 203 का ना और 204 का भी बोलो सेम पढ़ती सेम ऑर्डर. ठीक है. Yamra Elia versus DFO Bomdila.
the appellant absent without reasons assigned and intimated to the commission. The PIO is represented by Sri Gollonera, Gollonera, IC in charge APIO, Bomdila Forest Division with an authorization letter dated 8 January 2026 from the DIO. Heard the representative of the PIO. कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिला है, कुछ कुछ नहीं मिला है, ऐसा बोल रहा था लास्ट टाइम में, तो उसमें आपका क्या कहना है? सर वही मीटिंग नंबर 461 का तो उसका जो रिसेंटली कंप्लीट दे दिया ओके, तो ये उसका पोस्ट करके the representative of the PIO stated number one that the remaining information which was not provided to the appellant have been provided to him through and posted through registered for what's the date going on 9 June 2025. 9 June. June. हमने ऑर्डर किया था 19 जून को, फिर 9 जून को भेजा है. The hearing the representative of the PIO, the commission hereby observes number one, the remaining information have been sent to the appellant, but the absence of the appellant the absence of the appellant makes the commission difficult to ascertain, ascertain whether the registered post through which the information have been sent are received by the appellant or not. And therefore, the commission hereby orders number one, the appellant to be present in the next stage of hearing without pay to ascertain from him whether the information sent by the PIO have been received by him or not. In the absence, in the failure of the
appellant in the next date of hearing, the Commission will hear and determine this appeal ex parte. Number two, the PIO to be present in the next date of hearing without fail to ascertain the receipt of the information that have been sent by him to the appellant through the registered post. The Commission hereby orders the appeal the next date of hearing on 9 अप्रैल ना 9 अप्रैल को एक बार आ जाइएगा आप इन केस आप इन पर्सन नहीं आने से भी ऑनलाइन में आ जाइएगा एसर्टेनशिप करना है कि वो लोग मिला कि नहीं मिला है मिला है बोलने से या तो वो लोग नेक्स्ट में नहीं आने से तो हम डिसमिस कर देंगे दो सेम है ना आपका सेम ऑर्डर जाएगा यहाँ भी सेम भेजा है ना इसका दीजिए सर ये एक्चुअली आगे का वाला एपिक ये जितना गड़बड़ है फोर आगे का सिक्स इसका क्या वाला यही है हाँ ये वाला है हो जाएगा ये यहाँ में जाएगा दोनों सेम ऑर्डर सेम डेट ना अब याद रखिएगा डेट को 9 अप्रैल 10:30 है नए आने से भी डिसमिस कर देंगे